जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता पंचमे युद्धखंडे अथ नवमोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच। इदृग्विधं महादिव्यं नानाश्चर्यमयं रथं सन्नह्य निगमानस्वं स्तं ब्रह्मा पार्ययच्छिवं शम्भवे सोनिवेदादि रोपयामास शूलिनं बहुशः प्रार्थ्य देवेशं विष्णुवादिसूरसम्मतं ततस्तस्मिन्नथे दिव्ये रथप्राकारसंयुते सर्वदेवमय शम्भुरारोह महाप्रभु ऋषिभिस्तूयमानश्च देवगन्धर्वपन्नगे विष्णुना ब्रह्मणा चापि लोकपालै बभूवः उपावृतश्वाप्सरसां गणैर्गीतविशारदे शुशुभे वरदः शम्भु स तं प्रेक्ष्य च सारथिं तस्मिन्नारोहति रथं कल्पितं लोकसंवृतं शिरोभिपतिता भूमौ तूरगावेदसंभवा चचालवसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा चकम्पे सहसा शेषो सोढा तद्वारमातुर अथाद्य स रथस्यास्य भगवान् धरणीधर ऋषेन्द्ररूपी चोत्थाप्य स्थापयामास वैक्षणं क्षणान्तरे वृषेन्द्रोऽपि जानुभ्यामगमध्वरां रथारूढमहेशस्य सुतेजसोढुमक्षम अभिषुहस्तो भगवान् वद्यम च हयास्तदा स्थापयामास देवेस्य वचनाद्वैरथं वरं ततोऽसो नोदयामास मनोमारुतरन्हस ब्रह्मा हयान्वेदमया अन्नदा ध्वानरथवरे स्थित पुराण्युद्दिश्य वैत्रीणि तेषां स्खस्थानि तानि हि अधिष्ठिते महेशे तु दानवानां तरस्विनाम् अथाह भगवान् रुद्रो देवानालोक्य शङ्कर पशूनामाधिपत्यं मे दद्ध्वं हन्मीतस्तोऽसुरान् पृथक् पशुत्वं देवानां तथान्येषां सुरोत्तमा कल्पयित्वैव वध्यास्ते नान्यथा दैत्यसत्तमा। सनत्कुमार उवाच। इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवदेवस्य धीमत विषादमगमन् सर्वे पशुत्वं प्रतिशङ्किता तेषां भावमथ ज्ञात्वा देवदेवोऽम्बिकापति विहस्य कृपया देवा शम्भुस्तानीदमब्रवीत्। शम्भुरुवाच। मा वोस्तु पशुभावेऽपि पातो विबुधसत्तमा श्रूयतां पशुभावस्य विमोक्ष क्रियतां च स यो वै पाशुपतं दिव्यं चरिष्यति स मोक्षयति पशुत्वादिति सत्यं व प्रतिज्ञातं समाहिता ये चाप्यन्ये करिष्यन्ति व्रतं पाशुपतं मम मोक्ष्यन्ति तेन सन्देह पशुत्वात् सुरसत्तमा नैष्ठिकं द्वादशाब्दं वा तदर्ध्वं वर्षकत्रयं शुश्रूषां कारयेदस्तु स पशुत्वाद् विमुच्यते तस्मात् परमिदं दिव्यं चरिष्यथ सुरोत्तमा पशुत्वान्मोक्षय तद्दा यूयमन्त्र न संशय। सनत्कुमारी उवाच। इत्याकर्ण्यवचस्तस्य महेशस्य परात्मन तथेति चाब्रुवन् देवा हरिब्रह्मादयस्तथा तस्माद्वै पशवः सर्वे दवासुरवरा प्रभो रुद्रपशुपतिश्चैव पशुपाशविमोचक तदा पशुपतित्येतत् तस्य नाम महेशितु प्रसिद्धमभवद्हव्या सर्वलोकेषु सर्वदम् मुदा जयेति भाषन्त सर्वे देवर्षयस्तदा अमोदन्ना
देवेशो ब्रह्मा विष्णुपरेऽपि च तस्मिन्स्वं समये यच्च रूपं तस्य महात्मन जातं तद्वर्णितुं शक्यं न हि वर्षशतैरपि एवं विद्यो महेशान्यखिलेश्वर जगाम त्रिपुरं हन्तु सर्वेषा सुखदायक तन्देवदेव स्त्रिपुरं निहन्तु तदा नु सर्वे तुरविप्रकाश गजैर्यहै सिंहवरैरथैश्च ऋषैर्यस्युस्ते मरराजमुख्या हलैश्च शालैर्मुषलैर्भुशुङ्गे गिरीन्द्रकल्पे गिरिसन्निभाश्च नानायुधे संयुतबाहवस्ते ततो नुहष्टा प्रययुः सुरेशा नानायुधाढ्या परमप्रकाश महोत्सवा शम्भुजयं वदन्त ययुपुरस्तस्य महेश्वरस्य तदेन्द्रपद्मोदव विष्णुमुख्या जर्हुषु मुनय सर्वे दण्डहस्ता जटाधरा ववृषु पुष्पवर्षाणि खेचरासिद्धचारणा पुरत्रयं च विप्रेन्द्र प्रजः सर्वे गणेश्वरा तेषां संख्या च कर्तुं समर्थो वच्मि कांश्चन गणेश्वरैर्देवगणैश्च भृङ्गी समावृत सर्वगणेन्द्रय जगामयोगान् श्रीपुरं निहन्तु विमानमारयु यथा महेन्द्र केशो विगतवासश्च महाकेशो महाज्वर सोमवल्ली सवर्णश्च सोमपहसनकस्तथा सोमदृक् सूर्यवर्चाश्च सूर्यप्रेषणकस्तथा सूर्याक्ष सूरिनामा च सुरसुन्दर एव च प्रस्कन्दकुन्दरश्च कुन्दरखण्ड कम्पनश्वातिकम्पन इन्द्रश्वेन्द्रजवश्चैव यन्ता हिमकरस्तथा शताक्षशैव पञ्चाक्ष सहस्राक्षो महोदर सतिजुः शतासश्च रङ्क कर्पूरपूतन द्विशिखस्त्रिशिखश्चैव यथाहङ्कारकारक अजवक्त्र्योष्ठवक्त्रश्च हयवक्त्रो द्ववक्रत इत्याद्या गणपावीरा बहवोपरिमेयका प्रययुपरिवारशेषं लक्ष्यलक्षणवर्जिता समावृत्य महादेवं तदा पुस्ते पिनाकिनं दग्धुं समर्था मनसा क्षणेन सचराचरं दग्धुं जगत्सर्वमिदं समर्था किन्त्वद्दुग्धं त्रिपुरं पिनाकी रथेन किं चात्र शरेण तस्य गणेश्च किं देवगणेश्च शम्भु स एव गन्धूर्त्रिपुराणि तानि देवद्विषाव्यासपिनाकपाणि स्वङ्गतस्तत्र गणेश्च सार्ध्वं निजैसुराणामपि तो द्रुतोति किं तत्र कारणं चान्यद्वच्मित चेरुषि सतं लोकेषु ख्यापनार्थं वै यशः परमलापहम् अन्यच्च कारणं ह्येतद् दुष्टानां प्रत्ययाय वै सर्वेष्वपि च देवेषु यस्मान्नान्यो विशिष्यते इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखंड शिवयात्रावर्णनं नाम 9मोऽध्यायः। जय गुरुजी।